age of Kali. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्योंकि युग अवतार है, उन्होंने ये हरि नाम संकीर्तन, ये युग धर्म उन्होंने स्थापित किए हैं. Yes, and that is why our favorite song is the Hare Krishna Mahamantra. तो इसलिए हमारे जो फेवरेट को क्या पसंदीदा गाना है हरि नाम संकीर्तन. Yes, actually this chanting of the holy name, Golokera Premadhanna Harinam Sankirtan, this chanting of the holy name is fully transcendental, spiritual, coming directly from Goloka Vrindavan. तो ये जो हरि नाम है, महाराज श्लोक बोले हैं, इसका मतलब है हरि नाम जो है वो गोलक धाम से आए हैं. Yes, and actually our goal, the goal of all human beings, is to actually return to that Goloka Vrindavan. और हमारा जो उद्देश्य है जीवन का कि भगवत धाम में भगवान के पास वापस लौट जाए. We can only return to Goloka Vrindavan if we know about Goloka Vrindavan, especially by this chanting of the Hare Krishna Mahamantra. हम लोग गोलक धाम जा सकते वापस हरि नाम के द्वारा, भगवान के धाम के बारे में जानकारी होने के बाद. Because within this chanting of the holy name, within the Mahamantra, the whole spiritual world is contained within this mantra. तो भगवान के जो हरि नाम है उसके अंदर सब कुछ पूरा आध्यात्मिक जगत उसके अंदर ही है. हाँ, उसके अंदर ही है. Actually, Krishna, we hear from Shastra, from our acharyas, our Vaishnava acharyas, Krishna and his holy name are non-different. भगवान का जो नाम है और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है. So those who are not fortunate to come in contact with the holy name, they cannot know about Goloka Vrindavan. जिनका सौभाग्य नहीं हुआ कि भगवान के नाम के बारे में सुनने के लिए, तो भगवान गोलोक धाम के बारे में. And therefore they are forced to remain to suffer in this material world. क्योंकि भगवान के बारे में नहीं जान सकते, इसलिए वो लोग इस जगत में रह के दुख सुख भोग करते रहते हैं. Yes. The four main problems of life, actually, when we read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, we come to know that there's really only four problems in life. तो शास्त्रों से भागवतम से हम लोग जान सकते हैं कि जीवन के 4 समस्याएं हैं. Everything else is actually not a problem. इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है, 4 ही है समस्या. Most people know everything else as problem except these four problems. सब लोग सोचते कि ये 4 को छोड़ के सारे ही हमारे समस्या हैं. Everyone has a very long list of problems, so many problems. तो सबके बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मेन जो समस्या है वो 4 है. But yes, if we know that actually there's only 4 problems in life, then our life becomes more simple. तो जब हम लोग जान जाएंगे कि हमारे 4 ही समस्या है मेनली, तो हमारे समस्या बहुत कम हो जाएगी, लागू हो जाएगी. Then our mind will become more peaceful, we will become more happy, and we will be able to function properly. तब हमारा क्या होगा, हमारा जो मन है शांत हो जाएगा और भगवान की भक्ति ठीक से कर सकते हैं. So the 4 problems of life are mentioned in the Bhagavad Gita: Janma, Mritu, Jara, Vyadi, Dukkha, Dosa, Nidarsanam. Birth, death, old age, and disease are the real problems to solve in life. तो 4 प्रॉब्लम, 4 समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दुषान, दर्शन. जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 समस्या हैं. And we can easily solve these 4 problems by awakening our spiritual nature. तो ये समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? भगवान के भक्ति के द्वारा. Yes. What is our spiritual nature? Our spiritual nature is fully connected with the science of bhakti, devotional service. तो हमारा नेचर क्या है? हमारा भगवान के भक्ति करना. Yes. ये हमारा नेचर. Krishna Bhakti. कृष्ण भक्ति. Krishna Bhakti Nitya Siddha
Sadhya Kabunoi Sravanadi Sudachite Karae Udoy. We hear from Chaitanya Charitamrita that Krishna Bhakti Nitya Siddha. It is our eternal nature, eternal quality of all living entities. तो ये जो भगवान की भक्ति है ये हमारे शाश्वत 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 गुण है हमारा, शाश्वत गुण है हमारे अंदर छुपा हुआ. And that understanding of our eternal nature especially comes by the process of Sravanam, hearing. तो ये हमारा कैसे जाग सकते हैं ये श्रवण के द्वारा. So we come to holy place like Sridham Mayapur to engage especially in Sravanam Kirtanam. तो हम लोग धाम में आते हैं, उद्देश्य क्या है? श्रवण कीर्तन में ज़्यादा जोड़ने के लिए. And of course, most of us, we cannot live all the time in the holy dham. So we carry the same activity. We can also engage in Sravanam Kirtanam in our home. क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग धाम में नहीं आ सकते हमेशा के लिए, तो इसलिए हमारा घर में ही श्रवण कीर्तन में जोड़ना चाहिए. Yes, we can take the holy dham within our heart, and wherever we go, wherever we stay, we can carry the holy dham within our heart. तो धाम को हमेशा हमारे हृदय में धारण करना चाहिए. जहाँ भी जाते हैं हम लोग, धाम को हृदय में रखना चाहिए. And if we practice in this way, then we become qualified to actually, in this lifetime, by the mercy of Mahaprabhu, we become qualified to go back to Goloka Vrindavan. जब ये भावना मन में रहेगी, ये भावना लेके जब धाम से निकलेंगे, तब मन में ये भाव रहेगा भक्ति भाव, तभी हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं. How many would like to go back to Goloka Vrindavan? कौन है जो भगवत धाम जाना चाहते हैं? हाथ पर. If those, you have to raise both hands if you're very serious. दोनों हाथ ऊपर करना पड़ेगा. Only one hand, you may not go. Yes, and we go back to Goloka by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We can practice this chanting anytime, anywhere. तो ये जो हरि नाम संकीर्तन है वो कहीं भी किधर भी हम लोग जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं. Does not cost any money. ये पैसा नहीं लगता इसमें. Paisa nahi. Paisa nahi, yeah. So we encourage all of you to, whenever you have opportunity, visit Sridham Mayapur, very special place, and engage especially in Sravanam Kirtanam. तो हम लोग बोलते कि जब भी आपको मौका मिले धाम दर्शन कीजिए और श्रवण कीर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए. All of this is made possible actually by the founder Acharya of our society, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who had this vision of reviving Mahaprabhu's mission by establishing a nice center and temple in Sridham Mayapur. तो ये सब कुछ संभव हो पाया इसलिए कि श्रील प्रभुपाद जी है जो हमारा इसका प्रतिष्ठाता आचार्य है, उनका मन में ये भावना था कि भगवान की वाणी पूरा दुनिया में प्रचार करना है, और प्रभुपाद जी इस धाम में हमारा श्रीधाम मायापुर धाम में प्रभुपाद जी बड़ा सा मंदिर स्थापित किए. It is the duty and responsibility of everyone, especially born in the land of Bharatvarsha, to take up this mission of life and to also spread this mission as much as possible. तो हम लोग जो भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, सबका कर्तव्य है कि हम लोग ये हरिनाम संकीर्तन को हमारा जीवन में प्रयोग करें और साथ साथ प्रचार भी करें. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Anyone have any question? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ. Any doubts? कोई संदेह? हाँ.
चार जो बोले वो क्या चीज पर अच्छा से नहीं समझ पाए. चार What नियम problem? for problem. Four problems. For problem. She wants to know what are the four problems. What are the four problems? We will mention again. We mentioned the four problems. Maybe we mention quickly. The four problems, four main problems. She was listening, right? Yes. Yeah. The four main problems are experiencing different types of disease or illness which brings suffering. हाँ, तो ये चार समस्या में एक समस्या है कि कई सारा बीमारी हम लोग को पकड़ते हैं. Yes. Second problem is getting older every day. दूसरा समस्या है कि हम लोग बूढ़ा होते, बुढ़ापा आता है हमारा. You can ask older people if they like to grow old. तो आप लोग कई जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको पूछ के देख सकते हैं कि वो बूढ़ा होना चाहता है कि नहीं. Young people don't think about old age usually. तो जो हम लोग जो जवान हैं वो लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं. But if one is intelligent, one will see that most old people, they cannot hear so easily, they cannot see, they cannot digest. So many problems are there in old age. तो अब बूढ़े आदमी को पूछ के देख सकते हैं कि बहुत सारे समस्या है. खाना पचता नहीं है, देखता नहीं है, सुनता नहीं है. That's the second problem. Third problem is that all of us, and we don't know when, we have to die. तीसरा समस्या है कि हम लोग को मरना पड़ेगा. कब वो नहीं पता किसी को. No one wants to die. No one wants to die. कोई मरना नहीं चाहता है. No one wants to suffer. कोई दुख भोगना नहीं चाहते हैं. But we are forced by the laws of nature to experience disease. We're forced by the laws of nature to grow old. We're forced to die. लेकिन ये सारा समस्या हमारे ऊपर डाला जाता है जबरदस्ती. मरना पड़ता है, दुख में गुजारना पड़ता है, बुढ़ापा में गुजारना पड़ता है. And the fourth problem is that before dying, if we are not self-realized, by the laws of nature, we are forced to repeat the whole thing again by being born. चौथा समस्या है कि हम लोग को फिर से ये जो चक्कर है जन्म मृत्यु जरा जो से फिर से आना पड़ेगा अगर भगवान के बारे में नहीं जाना. So that is called the wheel of samsara. Repeated birth and death due to not knowing about who we are and who is Krishna. तो ये चक्कर में हम लोग पढ़ते रहेंगे जब तक हम लोग को पता नहीं चला कि हम कौन हैं या भगवान कौन है. So this knowledge, this understanding, this practice we can take up by keeping the good association of Vaishnavas. तो भक्त सत्संग के द्वारा ही हम लोग ये जागरूक कर सकते हैं. And there are four activities that will help us to actually become self-realized. Four activities that will help us to become self-realized. तो चार चीज है हम लोग को भगवान के बारे में या भगवान के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मदद करता है. That will help us to at least come to the mode of goodness. तो सत्य गुण में आने के लिए ये चार चीज मदद करता है. And by coming to the mode of goodness, we can go beyond the mode of goodness to what is called pure goodness, Suddha Sattva. तो सत्य गुण में आने के बावजूद हम लोग को शुद्ध सत्य में जा सकते हैं. What are those four things? ये चार चीज क्या है? One is no meat eating, fish or eggs. तो इसमें एक है कि कोई मांस मछली नहीं खाना. मांस मछली नहीं खाना. Yeah. No gambling activities. कोई जुआ नहीं खेलना. No intoxication, smoking, drinking. और कोई दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना. And no illicit sex life. और अवैध संबंध से बच के रहना. These are
called the 4 pillars of dharma. ये है 4 स्तंभ धर्म का। हाँ, सत्यम दया तपा सोचम. सत्य दया तप सोच। These 4 qualities will develop very nicely if one follows these 4 principles. तो ये 4 सत्य दया तप सोच, ये 4 डेवलप होगा जब तक हम 4 चीज को फॉलो करेंगे। Yes, that is dharma. That is actually our dharma. ये हमारा धर्म है। हाँ, सनातन धर्म। सवाई पुंसम परो धर्मो जतो भक्ति रघव सजे अहैतुकीय प्रतिहता यगात्मा सुप्रसिद्धति. If we follow the principles of dharma, then our life will become very peaceful and very successful. तो जब हम लोग धर्म को फॉलो करेंगे, मानेंगे धर्म को, तभी हम लोग सुकून मिल सकता है। और भगवान के बारे में Who wants to be happy? और कौन चाहते हैं सुख? कौन चाहते हैं? Nobody. कौन सुखी होना चाहते all of हैं? you चाहिए। सुखी कौन होना चाहते हैं? Yes. But not happy like temporary happy. Material people, those who are not devotees, they are happy, but this is temporary happiness and very shallow. जो जागतिक जो सुखी रहता है लोग, वो क्षणिक समय के लिए, खूब कम समय के लिए रहता है। It is called chapala sukha. इसको चपल सुख बोलते हैं, क्योंकि ये कम समय के लिए रहता है। We are searching for permanent happiness, always to be happy. तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमेशा के लिए कैसे खुश रहें। So we can only become eternally happy, always happy, by coming to this higher level of consciousness. तो हमारा चेतना जब तक हम लोग चेतना ऊपर नहीं ला सकते, तब तक ये खुशी या सुख नहीं मिल सकता। Yes. The level of ananda, actual happiness, pure happiness, anandamaya. Any other question? और कोई प्रश्न? किन्हीं का और कोई प्रश्न? From the Prabhu side? ये देखो। हरे Oh, कृष्ण yes. महाराज, ये इज तुलसी रामायण ऑथेंटिक और नॉट? What is it? तुलसी रामायण ऑथेंटिक और नॉट तुलसी रामायण? Whether Tulasi Ramayana is. He wants to know Wow. Tulsidas written Ramayana is authentic रामचरितमानस? Ramcharitmanas is authentic or not? As opposed to Valmiki. No. One of them is not authorized. उनमें से एक जो है ऑथराइज नहीं। So there are many writings, and sometimes writings by great persons, but the principle of Guru Parampara must be followed. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि कौन सा रामायण सही है, या तुलसीदास का रामायण सही है कि नहीं। महाराज जी बोल रहे कि जो गुरु परंपरा को फॉलो करके लिखता है वो सही है। जो गुरु परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग ये इसको नहीं मानते। Yes. So the principle of Guru Parampara is nicely stated, established in the Bhagavad Gita by Krishna. तो गुरु परंपरा के बारे में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बताए हैं। There are many sadhus in India, many brahmanas, many teachings, but we must know which teachings to follow. हाँ, तो ऐसे बहुत सारे साधु हैं, सन्यासी हैं, बहुत सारे शिक्षा देते हैं लोग, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए कौन सा सही है। So if you read literatures from our Vaishnavacharyas, our Vaishnavacharyas are very nicely explaining what is bona fide, what is not bona fide. तो हमारे आचार्य का परंपरा पढ़ के देख सकते हैं कि उन्होंने लिखे हैं कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं। Yes.
Any other? और कोई प्रश्न? So everyone is happy being in Mayapur? Yes, ma'am. तो Yes. सब लोग खुश है मायापुर आके? हाँ हाँ बोलो. Yeah. So we hope that you will continue to enjoy your last 1 or 2 days that you are here in Sri Mayapur, so that when you go back to your villages, you will be very inspired and you'll be able to inspire everyone in your village. तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जितना समय मायापुर में रहेंगे खुश रहेंगे और आगे जाके घर में जब जाएंगे तब आप ऐसे खुशी बने रहेंगे और दूसरों को भी बांट सकेंगे. And that at least you try to bring one small book back to your village. One small book, Prabhupada's book. Yeah, from Mayapur. तो महाराज बोल रहे कि आप सब प्रयास कीजिए कि एटलीस्ट एक किताब लेके जाने के लिए प्रभुपाद का मायापुर आए हैं इसलिए. How many have Japamala here? किस किस के पास जपमाला है आप बताइए. Okay. Yes. So those who don't have Japamala, we have many Japamalas in the temple. You can take one. जिसके पास जपमाला नहीं है तो आप लोग कृपया जपमाला ले सकते हैं मंदिर से. This Japamala is our link, our connection with Goloka Vrindavan. तो ये जो जपमाला जप के द्वारा आप भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Prabhupada ki jai. Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki jai. From different villages they come. Yes, from different